तो नमस्कार ऑल ऑफ यू। आमर जो आंसर राइटिंग बैच चलती ओडिशा जुडिशियल सर्विस पे, तो आज आम तार नेक्स्ट स्टेप को जीवा। आम ऑलरेडी हिंदू मैरिज एक्ट रो सेक्शन 5 to 8 टा देखिथिलु। ओके, आज आम सेट 1 टा देखिथिलु, आज सेट 2 टा देखिरा। तो 90 मिनिट्स आपन को दिया होची 15 मार्क। ओके, 15 मिनिट आपन को दिया होची, ता माने 15 मिनिट रे गोटे आंसर सरीबो। ओके, so first question को आसन, explain the prohibition laid down under Hindu law and Muslim law with regard to valid। बहुत बार रिपीट है कॉमन क्वेश्चन हिंदू लॉ पाई और मुस्लिम लॉ पाई दीटा पाई। तेणु छोटो इंट्रोडक्शन हिंदू लॉ रे ओके हिंदू मैरिज एक्ट रे कोन कोन आपनकर सब रेस्ट्रिक्शंस अछि सेटा प्रॉपर्ली लिखिबे। एटा बुझिया पाई आपन को बहुत डिटेल्स रे देखि, किंतु आपन को गोटे दी लाइन किंतु सब गुडा हेडिंग्स आपन को फॉलो करिवार अछि। ओके, सेटा बहुत इंपोर्टेंट, किछि भी पॉइंट आपन छाडी। ओके, तापर ठीक सेमती प्रोहिबिशन अंडर मुस्लिम लॉ अंडर रे कोन कोन प्रोहिबिशन अछि। ओके, तापर केस लॉ ता भीतर दे परिबे जदि समय मिलुची हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ ऊपर एई एस्पेक्ट रे किछि कंपैरेटिव एनालिसिस आपण दे परिबे। समय अछि जदि लीगल मैक्सिम इलस्ट्रेशन आपण बुझिया पई छोटो गोटे कंक्लूजन जदि बड़ लाइक एठी त 15 मार्क दउछु, स्टिल देन 15 मार्क पई भी आपण स्ट्रक्चर फंक्शन डायग्राम कर परिबे, नले एटा माइंड मैप ता जनरल डायग्राम ता जोटा आपण मने रखिया पई सुविधा हबो। ठीक है, क्वेश्चन 2 को असंतु, in certain castes in Punjab, okay, Anand Karaj is a customary ceremony for a valid marriage. Kehar Singh married to Anand Kaur by simply garlanding each other and not performed Anand Karaj. What are the consequences of such marriage and position of legitimacy of children of this marriage? तो एटा गोटे प्रॉब्लम टाइप रो देछि, थ्योरी टिके एक्सप्लेन करिवे, तापर जो हमरो ओके प्रॉब्लम को जेंते आंसर करंती, that is the hierarchy structure. F for facts, I for issues, R for rules and regulation, A for application in the case, और C for conclusion or the verdict. Okay, तो किछि जदि एई टाइप रो सिचुएशन रो आपनकर मने पडुती केस लॉ ताले सेगुरा भी आपण देई परिबे। ओके, ये आपण को बुझिया पई बहुत डिटेल्स देछि, एते डिटेल्स हमें कोबे परीक्षा लिख परिबन किंतु जानिबार अछि। ओके, तो जहाँ क्वेश्चन पचार ताको प्रॉपर्ली हेडिंग देबे, तार सब हेडिंग्स और पॉइंट गुड़ा ए पॉइंट वाइज फॉर्म रे लिखा हबो। जदि ए सेम जिंसटा को पैराग्राफ रे लिखि देली, यदि मते एथरे 10 मिलिबो ताले सेथरे मते 3 की 4 दे दोछन। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग नाउ। जो माने खाता मगे की देखचंती आपण को मुंडो खराब होतु, यदि खाता रे तो सब लिखाई छी तो मते मार्क कोन एंती मिलची, whereas सेम जिंस लिखि की अलगा पिला 100 ऊपर मार्क रखछन। ओके, देयर हैव बीन पीपल हु हैव स्कोर्ड 100 प्लस मार्क्स इवन 2023 रे भी क्लास जो मैं जॉइन करते मु केजो खाता भी देखि इन कॉन्फिडेंस क्लास भीतर। ओके, ता माने कोन जदि ठीक स्ट्रक्चर रे आपण लिखुचंती यू कैन गेट द मार्क। स्ट्रक्चर ता बुझी जेतु एनालिटिकल क्वेश्चन बेसी पड़ेनी, डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े, तेनु प्राय सब पिला आंसर ता जानि थांती, आंसर ता ठीक लेखन बुझी परले। तो तापर माइंड मैप ता देखंतु, माइंड मैप ता बहुत आपण को दरकार पड़े जेतबेले जल्दी जल्दी रिविजन करिवार छै, पूराटा तो 6 पेज पढ़ी परिबेन ना। नेक्स्ट, Chandran Daji is the valid customary ceremony in case of marriage of a widow. The whereabouts of Lakha Singh was not known for 8 years, and therefore family members decided that Phul Singh, his younger brother, should marry with Lakha Singh's wife Pritam Kaur. They performed Chandran Daji. After 5 years, Phul Singh deserted Pritam Kaur and solemnized marriage with another woman, Love Kaur. Decide the validity of marriage of Phul Singh with Pritam Kaur and Love Kaur. Decided cases, okay, referred to decided cases. So एटा गोटे पूरा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन फिराक स्ट्रक्चर रे कराबो। ए एनालिटिकल क्वेश्चन ओडा बेसिक करंतु अपन देखिबे 90% ऑफ दिस क्वेश्चन सीधा इलस्ट्रेशन थ्रू आसे। ठीक है, तो सेटा आपन को माइंड रे रखिबार अछि। इलस्ट्रेशन जेतले पढुचंती डायरेक्ट टू टिके भलरे पढंतु इलस्ट्रेशन गुडा। ये कोठु एमती बाहरु पड़े आइदर इलस्ट्रेशन नाले सुप्रीम कोर्ट केस रु पड़िबो।
ओके थरे आप पढ़िले ये जिनसा केते गोटे जिन आम बुक रे दिया ही न था जोटा कि एप्लिकेशन दरकार पड़े और सेटा आप ये पाइबे तो तार टेक्स्ट स्ट्रक्चर ये टेक्स्ट स्ट्रक्चर मास दि मास प्रैक्टिस कले आप निजे जान पारे मते केमती डायग्राम करार तापर माइंड मैप टा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 राइट शॉर्ट क्रिटिकल नोट ऑन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज क्रिटिकल नोट लिखिबार अछि ओके तेणु कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कौन स्टैट्यूट को अमेंडमेंट्स कौन सुप्रीम कोर्ट रो केसेस सेगुड़ा सब एथरे मोर लेखा हो बुझी पड़छन ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड तापर तार माइंड मैप टा क्वेश्चन 5 को आसंतु सब गुड़ा 15 मिनिट सारे जो मैंने केबे भी आंसर लिखि ना तो ठीक अच्छे आपण एबे या भी ताको आइदर आपण ए क्वेश्चंस देखि करंतु मु सेते क्वेश्चन पढ़ी दूची सो दैट आपण निजे जोड़ा कर परिए नहले जो मैंने आंसर राइटिंग बैच रे जॉइन करछंती आपण टाइम नेकी लेखंतु एटलीस्ट वन क्वेश्चन पर डे ताको अधिक हेले एंड बहुत जो गोटे भूल करछन सेटा मुटे क्लियरली कहे आपण कोर्स रे जॉइन कले आपण खाली पढ़ी दउछन एटा क्वेश्चन एटा आंसर एटा क्वेश्चन एटा आंसर एटा मैथ्स भलिया ओके मैथ्स रे कोन ना आपण फार्मूला सब पढ़िथिबे किंतु प्रैक्टिस केबे करनथिबे ताले जो दिन परीक्षा अब आपण देखिए हाथ चलियो ऑल्दो मु करी से क्वेश्चन ता गुड पढ़ी की क्वेश्चन ता लेकिन एठी भी एग्जैक्टली से आबो आपण जदी खाली पढ़ी पढ़ी चलचंदी किंतु लेखु नांती मु एमति भी कोन कि 2 घंटा लेखंती यार समय कि 2 घंटा लेखियो बहुत बढ़िया तर रैंक ऑलमोस्ट गोटे थुआई चोली कहि परिबा किंतु जदी से ठीक स्ट्रक्चर रे लिखियो एटलीस्ट गोटे क्वेश्चन तो लिखंतु ओके ताले सेटा आ एमति ना कि प्रीलिम्स सरले बहुत डिफिकल्ट हे जो बहुत गुडे जिंस रे पढ़ा पे पड़िबो क्वेश्चन 5 को आसंतु राइट क्रिटिकल राइट शॉर्ट नोट ऑन consequences of solemnization of marriage between two Hindus in violation of provision of section 7 of HM. Okay. So short introduction. Section 7 कौन कहूची जदि violate हला कौन हबो ए सब जिंस लिखिबार अछि इलस्ट्रेशन दे परिबे समय थिले केस लॉ गोटे एटलीस्ट देबे ये 4-5 टा देकी सेटा आपन को बुझिया पई एते हमें लिखि परिबे क्रिटिकल एनालिसिस कहि तो क्रिटिकल एनालिसिस ता कले समय जदि अछि गोटे मैक्सिमम देबे ये 5-6 टा मैक्सिमम दे दोची ओके तो जब टेक्स्ट बुक भी आप पढ़ी ना ये मॉडल आंसर पढ़ी कि इजिली कॉन्सेप्ट पूरा बुझी पारे है नुह कि टेक्स्ट बुक पढ़ानी टेक्स्ट बुक टा फंडामेंटल जिन बहुत पिला कोचिंग जॉइन करती कि जनरली भी पचारती ओके जदि आप किसी एग्जाम विषय जानवर अच्छी एमती किसी मैंडेटरी नुह कि कोचिंग टा जॉइन करेंगे आप जनरली भी जो नंबर दिखाई मत व्हाट्सएप करेंगे पिला बहुत टेक्स्ट बुक पचारती मुझे टेक्स्ट बुक टा पढ़ी ना से पढ़ी तो मुझे कहीदे टेक्स्ट बुक लाभटा या से टेक्स्ट बुक लाभटा है टेक्स्ट बुक जदि समय अच्छी स्पेशली जो मैंने फर्स्ट ईयर अच्छा सेकेंड ईयर अच्छा फिफ्थ ईयर भितर जो 5 ईयर लॉ कि 3 ईयर लॉ रे अच्छा आपन टेक्स्ट बुक को धरतु जो मानकर एबे समय नहीं टेक्स्ट बुक पढ़िया पे ताले आपन एप्लिकेटिव नोट्स एजेंसी एथरे एगुडा देखि परिबे ओके एटा तार स्ट्रक्चर फंक्शन डायग्राम और एटा तार वायलेशन ऑफ सेक्शन 7 एचएमएस ओके नो एसेंशियल सेरेमनीज नो वैलिड हिंदू मैरिज ठीक है को केसेस है तुम दे दीजिए सर एसेंशियल सोलेमनाइजेशन है वाला नो वैलिड मैरिज रजिस्ट्रेशन ओके सोशल एंड लीगल इफेक्ट चिल्ड्रन बाइगेमी मैट्रिमोनियल राइट्स इंपोर्टेंट केस लॉस दे देला और फाइनल कंक्लूजन दे देला ए एती खाली जानलेला रिवीजन पई मते 6 पेज जो पढ़िया दरकार ने एती खाली देख दी हैला सेते एटा दिया होते अपन एटा परीक्षा रे करिवा नहीं सेटा मु राइटिंग क्लास से कहि अपन को मेंस क्लास कोर्स रे एटा अपन को बुझिया भाई एती यदि परीक्षा लिखबे अपन 20 मिनिट सेथरे पढेबो एटा अपन को बुझिया पे बुझ पाले तो परीक्षा रे जो एग्जाम रे जो अपन करिवे शॉर्ट डायग्राम थोड़ा अलग राइट लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन what is the concept of marriage under Hindu Marriage Act 1955 and how it is different from relationship which is in nature of marriage okay in nature of marriage eta discuss अपन करिवार अछि 5 to 8 बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेप पे हमें एटा तीनटा स्टेप रे भागी ताको डिवाइड करतु फर्स्ट दिटा आज सेकंड ता करला पुनी नेक्स्ट सेशन में मु आरो थर्ड सेट ता देबी 5 to 8 अपन 5 to 8 तो एती कम सेक्शन अछि आ पई 18टा क्वेश्चन कोन दरकार काहे एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए आ भितरु प्राय पड़े ठीक है जोटा इंपोर्टेंट हो सेटा में स्किप कर दो तो हिंदू मैरिज वर्सेस रिलेशनशिप नेचर ऑफ मैरिज ओके कंप्लीट अपन सेटा पाइजे पारी ठीक
So with that, I wish you best of luck. Start writing answer. ଆଉ write one answer. ଗୋଟେ ଲେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଢିଦେଲେ ଏଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ ଖାଲି ପଢିବି ବସିକି ଆନ୍ସର ଗୁଡା ବିନା ଲେଖିକି, ତାହେଲେ ଏତେ ଲାଭ ନ ହେଇପାରେ। ଓକେ, so I wish you all the best. Next session ରେ ଆମେ set 3 କୁ ଯିବା। ଓକେ, thank you all.